Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students, today we will explore the facts about the entitled theme Operations of Operant Conditioning Theory. As we have already discussed, one of the important operations of operant conditioning theory in previous lecture, that operation was operation of shaping. Now, dear students, in today's lecture, we will focus on second operation, which is involved in the operant conditioning theory, that is entitled as operation of extinction. Dear students, as we know that extinction simply means the withholding of reinforcement that results the non-occurrence of the responses. यानी कि जब हम reinforcement को सीज कर देंगे या स्टॉप कर देंगे and it will finally result the non-occurrence of the responses. क्योंकि organism response देता है because of to get the reinforcement or reward. But when we will withhold the reinforcement or reward, it will definitely lead the organism in the state of extinction. It means there would be non-occurrence of the responses. जिस तरीके से B.F. सिकनर ने सिकनेरियन बॉक्स में एक रेट को रखा. Rate was pressing the lever in order to get the reward in the form of food. Now, one time what the B.F. Sickner did, Rate was pressing the lever continuously, but experimenter, I mean to say you, B.F. Sickner, withholded the reward or reinforcement. उसने reinforcement की सप्लाई काट ली. यहाँ से चूहा जो था वो लिवर को कंटिन्यूअसली प्रेस करता था, but without getting the reinforcement or reward. And automatically जो रेट में responses थे वो धीरे धीरे स्लो पड़ गए. And time came when the rate left to press the lever. So we can say that this state is known as extinction. यानी कि एक इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ से एक्ट कर रहा है, यहाँ से वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, या हम दूसरे मायने में कह सकते हैं कि रेस्पॉन्स देता है, लेकिन रेस्पॉन्स देने के बावजूद the organism is not getting the reward or reinforcement, and it will finally lead the organism in the state, and that state is known as state of extinction. That is why we defined extinction is that state where there is the non-occurrence of the responses, or non-occurrence of the responses are because of when we will stop or cut the supply of reinforcement. जब भी हम reinforcement की supply कट कर लेते हैं तब we will not get the responses from the organism. Same is the case with the learner. अगर हम एक learner की बात लेंगे, learner जो है वो academics related different tasks perform करता है, लेकिन अगर टीचर ने reinforcement नहीं दिया, reward नहीं दिया, and same way it will also lead the learner in the state of extinction. It means the learner will not give the responses. The learner will not perform the tasks related to the education, related to his or her academics. या इसके बावजूद भी जो concept of reinforcement है ये सिर्फ use education या animals पे नहीं होता है. Apart from it, it is used in everywhere. अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करेंगे, वहाँ पर वर्कर तब तक काम कर सकता है जब तक उसे रिवॉर्ड मिलेगा. इसीलिए वो वर्कर्स दिन दुगनी रात चुगनी करके रेस्पॉन्स देते हैं. आई मीन टू से यू टास्क्स परफॉर्म
कर लेते हैं जब तक उन्हें रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट मिलता है। इसीलिए रीइंफोर्समेंट, आई मीन टू से यू, रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट वहां पर बोनस की सूरत में होता है, यानी कि द वर्कर्स आर गिविंग द रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ बोनस। अगर वही बोनस उन्हें काटा गया है, मॉनिटरी बेनिफिट्स जो एक्स्ट्रा मिलते हैं उन्हें काम के, उसको काटा गया है, इट मीन्स इट विल लीड द वर्कर्स who are working in the industry in the state of extinction where there would be non-occurrence of the responses. So in nutshell we can say that extinction is that operation involved in operant conditioning theory where there is non-occurrence of the responses. It means that organism is not giving any type of response because withholding of the reinforcement. Once we stop the reinforcement, it leads the organism in the state of extinction. Now, operation number third, spontaneous recovery. Dear students, spontaneous recovery as one of the important operations involved in the operant conditioning theory. ये जो ऑपरेशन है ये ऑलवेज स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द एक्सटिंक्शन. नाउ व्हाट इज spontaneous recovery? Spontaneous recovery simply means re-emergence or reoccurrence of the responses from the organism is known as spontaneous recovery. यानी कि जब फिर से एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस या रिअकर रेस्पॉन्सेस दोबारा से हो जाएंगे तो उस स्टेट को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से B.F. सिकनर ने एक ऑर्गेनिज्म, आई मीन टू से यू, जो एक्सपेरिमेंट उसने रेट और पिजन पे किया, and how the rat led in the state of extinction. अब फिर से चूहे में रेस्पॉन्सेस रिअकर करने हैं या रिप्रोड्यूस करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, B.F. सिकनर ने सिकनेरियन बॉक्स में रेट को रखा था और वो रेट जो था दैट वाज इन द स्टेट ऑफ एक्सटिंक्शन, और अब एक्सटिंक्शन से हमें उसे वापस लाना है. It means we have to reproduce or re-emerge the responses from the rate. अब फिर से किस तरीके से रेट जो है वो रेस्पॉन्स देगा, किस तरीके से हम रिप्रोड्यूस एक रैट में, एक चूहे में रेस्पॉन्स को कर सकते हैं. नाउ आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब इसी रेट को दोबारा फिर से इस बॉक्स में रखा गया, नाउ रेट विल गिव द रेस्पॉन्स बट स्लोली. अब जो ये चूहा है ये धीरे से अब रेस्पॉन्स देगा. आई मीन टू से यू, द रैट विल स्लोली प्रेस द लिवर. तो इसका जो पहला रेस्पॉन्स होगा ये बहुत धीमा होगा. अगर अब रेस्पॉन्स देने पे रैट ने फिर से रीइंफोर्समेंट हासिल किया, इट मीन्स दैट अगर एक्सपेरिमेंटर ने इसे थोड़ा बहुत रीइंफोर्समेंट दिया इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो यूं ही उसे फूड मिल जाएगा. सो इट विल रिजल्ट द सेकंड रेस्पॉन्स. इट मीन्स सेकंड रेस्पॉन्स विल बी जनरेटेड इन द ऑर्गेनिज्म, आई मीन टू से यू रेट. लेकिन जो सेकंड रेस्पॉन्स होगा वो फर्स्ट रेस्पॉन्स से बहुत क्विक होगा. अगर अब रैट ने सेकंड रेस्पॉन्स पे भी रीइंफोर्समेंट हासिल किया, जो अब रेट का थर्ड रेस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा क्विक होगा, वो ज़्यादा रैपिड होगा. इसी तरीके से आहिस्ता 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 से जो ऑर्गेनिज्म, आई मीन टू से यू रेट जो है, इसमें क्विकली रेस्पॉन्सेस रिपीट हो जाएंगे. एंड टाइम विल कम व्हेन द एक्सपेरिमेंट विल रिप्रोड्यूस और रीजनरेट the all responses in the organism. So this state is known as spontaneous recovery. Now same is the case in case of learner. अगर हम एक लर्नर की बात लेंगे, वो लर्नर
जो एक्सटिंक्शन का शिकार हो चुका है, जो रेस्पॉन्स देता था लेकिन टीचर उसे रीइंफोर्समेंट नहीं देता था, रिवार्ड नहीं देता था। अब फिर से हम उसे लर्निंग सिचुएशन में डालेंगे। अब जो ये लर्नर है वो एक्सपेक्ट करेगा मैं रेस्पॉन्स फिर से दूंगा, आई विल परफॉर्म द टास्क्स रिलेटेड टू द एकेडमिक्स। जब वो पहली टास्क करेगा, अगर टीचर ने रिवार्ड दिया इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, in the form of encouragement, in the form of grades, in the form of scholarships and prizes, it means that quickly recurrence of the responses will take place in the learner, and finally it will lead the learner in the state of spontaneous recovery. Spontaneous recovery is nothing, it is basically that process or that operation which is involved in the operant conditioning theory, where we regenerate or re-emerge the responses from an organism. और इसके बगैर भी हमने एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री की दी है, उस इंडस्ट्री में जहाँ पर बहुत से मजदूर या वर्कर्स वर्क करते हैं, अगर वर्कर्स को बोनस फिर से मिला कंपनी की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से या ओनर की तरफ से, तो वो फिर से लीप्स एंड बाउंड्स वर्क करेंगे, एंड द ओनर विल गेट द सक्सेस टू रिकवर द 100% responses from all the workers who are working in the industry. So this state is known as spontaneous recovery. It is nothing, it is simply the reoccurrence or reemergence of the responses. किस तरीके से जब एक इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्शन का शिकार होता है, फिर किस तरीके से उसमें हम रीइंफोर्समेंट के जरिए या रीइंफोर्सर्स के जरिए उसमें फिर से रेस्पॉन्सेस रिप्रोड्यूस करेंगे या रीइमर्ज करेंगे। नंबर 4, operation of reinforcement. Dear students, operation of reinforcement is itself biggest operation involved in the operant conditioning theory. As we know that reinforcement simply means any environmental substance or event which accelerates the rate of responses from an organism. For example, food, water, money, encouragement, etc. are various reinforcers, and these reinforcers help us to increase the rate of responses from an organism. जैसे कि हम सब जानते हैं that reinforcers are being called the heart of learning. It means no learning is possible without the reinforcement when we will look through the prism of operant conditioning theory. Operant conditioning theory believes that it is the reinforcement which helps us to shape the behavior of an organism. अगर हमें लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है तो we must use the various types of reinforcers, or we should use the rewards. The various rewards and incentives will definitely help to boost the performance of an individual or any organism. किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए reinforcement का होना जरूरी है. That is why reinforcers are being called the heart of learning. जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर हम रीइंफोर्समेंट को बाहर निकालेंगे या स्विच ऑफ करेंगे, इट लीड्स द ऑर्गेनिज्म इन द स्टेट ऑफ एक्सटिंक्शन. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. सो द रीइंफोर्समेंट actually helps us to motivate the learner, motivate the organism in order to perform the particular type of task. Dear students, how reinforcement is important? For example, if the learner is doing very hard work,
performing the task, it is because of the reinforcement. If the labor is performing the hard tasks, it is because of the reinforcement. If the worker who is working in the industry, the industrial worker is doing leaps and bounds work, it is because of reinforcement. Because reinforcement is known as heart of learning. जो ही हम reinforcement को withhold करते हैं या sit off करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म टास्क को नहीं परफॉर्म कर सकता है, वो अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. इसीलिए B.F. Sickner mentioned that it is the whole learning which revolves around the reinforcement. Dear students, reinforcers are classified into various categories. Number 1, positive reinforcers. Dear students, positive reinforcers are basically pleasant type of stimuli. It means individual or organism performs the activity in order to gain the pleasure. यानी कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म कोई भी टास्क परफॉर्म कर लेता है क्योंकि एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में उसकी विल होती है, मोटिवेशन होती है. पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स आर प्लेजेंट टाइप ऑफ स्टिमुली. नाउ व्हाट आर द प्लेजेंट टाइप ऑफ स्टिमुली? Pleasant type of stimuli means the things which will give the pleasure to the organism. For example, food is the positive and pleasant stimulus. Water is the positive reinforcement. Sexual contact is the positive reinforcement. Wealth and property is the positive reinforcement. So individual performs the activity in order to gain the pleasure, keeping in view the positive reinforcement. Positive reinforcement does not only gives the pleasure to the organism or individual while performing any type of activity, but it also helps to strengthen the behavior of an organism. Positive reinforcement always encourages or motivates an individual to remain in the state of learning. Why? Because individual or organism gets the pleasure. तो वो pleasure हासिल करने के लिए वो learning state में रहना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल, लर्नर को जब अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती है या मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो लर्नर लर्निंग सिचुएशन में बाय विल रहना चाहता है. अगर हम एक वर्कर की बात करेंगे जो एक इंडस्ट्री में काम करता है, बोनस एक्स्ट्रा मिलने से वो वर्क ज़्यादा फास्ट करता है और कंटिन्यूअसली चाहता है कि उस काम को अंजाम देना. वाई? बिकॉज एक्स्ट्रा बोनस गिव्स द प्लेजर टू द इंडस्ट्रियल वर्कर और सिंपली वी कैन से दैट लेबर, और वो उस काम को और मजबूती से करना चाहता है. सो दिस इज द पॉजिटिव reinforcement or reinforcers. Nutshell, we can say that positive reinforcers are pleasant type of stimuli. These are the pleasant type of substances or incentives which helps an individual or organism to emit the responses by means of will. तो will से वो response को emit करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें pleasure मिलता है वो टास्क परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज दे आर रिवॉर्डेड बाय द पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स. जिस तरीके से हमने बहुत से पॉजिटिव रीइंफोर्स की एग्जांपल दी है. फॉर एग्जांपल, फूड इज द पॉजिटिव रीइंफोर्सर, वाटर इज द पॉजिटिव रीइंफोर्सर, सेक्सुअल कंटैक्ट इज द पॉजिटिव reinforcer, medals, wealth and other
incentives or the positive reinforcers. Number second, negative reinforcers. Dear students, negative reinforcers are contradictory with the positive reinforcers. As we have already discussed, positive reinforcers are pleasant type of stimuli, while as negative reinforcers are unpleasant type of stimuli. Now, what is unpleasant type of stimuli? Unpleasant stimuli is that type of stimuli or any substance which gives the pain to the organism. जो स्टिमुले एक ऑर्गेनिज्म को पेन दे सकते हैं उन्हें हम कहते हैं अनप्लेजेंट टाइप ऑफ स्टिमुले. द नेचर ऑफ अनप्लेजेंट टाइप ऑफ स्टिमुले इज पेनफुल. द इंडिविजुअल परफॉर्म्स द एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अवॉइड समथिंग. बाय विल एक इंडिविजुअल टास्क को नहीं परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन अगर वो करता है वो किसी मजबूरी की वजह से करता है. मजबूरी क्या है? टू अवॉइड और टू गेट रिड फ्रॉम द नेगेटिव टाइप ऑफ reinforcement or reinforcers. For example, condemnation by the peers. And moreover we can say that social disapproval. यानी कि एक इंडिविजुअल को टीचर जब बेइज्जती करता है, रिब्यूक करता है, तो उस रिब्यूक से बचने के लिए, कंडमनेशन से बचने के लिए या सोशल डिसअप्रूवल से बचने के लिए द ऑर्गेनिज्म और द इंडिविजुअल सिंपली परफॉर्म्स द टास्क. I mean to say you, the learner is able to perform the task. Otherwise, the learner is not ready to perform the task. He or she performs because to get rid from the social disapproval and condemnation by others, especially by the teacher. इस पेन को अवॉइड करने के लिए, इस अनप्लेजेंट स्टिमुले से छुटकारा पाने के लिए the individual acts as per the will and wish of others. Number third, punishers. Punishers are basically aversive stimuli. Aversive means which are painful, based on experimental conditions. Dear students, there is one of the eminent behavioral psychologists whom we call father of behaviorism. I mean to say you J.B. Watson. Dear students, J.B. Watson ने एक एक्सपेरिमेंट शीप पे किया. तो शीप के लेग पे एक इलेक्ट्रोड फिक्स किया गया. इलेक्ट्रोड इज दैट सब्सटेंस थ्रू विच वी पास द इलेक्ट्रिसिटी. और वही इलेक्ट्रोड जो था उसके साथ में एक स्विच भी रखा गया, जो स्विच ऑफ भी होता था और ऑन भी होता था. जब एक्सपेरिमेंटर ने, आई मीन टू से यू J.B. वाटसन ने इलेक्ट्रोड के जरिए इलेक्ट्रिक करंट पास की, तो दैट इलेक्ट्रिक करंट वाज द बेसिकली पुनिशर फॉर द शीप. जो ही इलेक्ट्रिक शॉक शीप को लगा तो शीप ने जोर का झटका उस टांग से दिया जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक एज ए पुनिशर लग गया. तो फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया तो शीप ने फिर से अपने पैर और टांग को हिलाया. नाउ ऑटोमेटिकली टांग जो है वो राइट डायरेक्शन में स्विच के साथ टकरा गई एंड स्विच ऑफ हो गया. स्विच ऑफ होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कट गई. एंड विद द पैसेज ऑफ एन टाइम कि एक्सपेरिमेंटर J.B. वाटसन इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहरा था. क्यों? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कंप्लीट ट्रेनिंग टू द शीप हाउ टू मेक ए स्विच ऑन एंड ऑफ. किस तरीके से एक शीप लर्न करेगी कि इलेक्ट्रिक करंट को खत्म करना. एंड दैट इलेक्ट्रिक शॉक वाज एवर्सिव टाइप ऑफ स्टिमुलस.
So that is why here we defined punishment is that which is aversive in nature based on the experimental arrangements, जहां पर अधिकतर हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं या ऐसा एवर्सिव स्टिमुलस जिसमें हम मेटल का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत सख्त होता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए. नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इलेक्ट्रोड्स के जरिए शीप को इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था एंड शीप वाज कंटिन्यूअसली स्ट्राइविंग द लेग, बाई चांस जो लेग थी वो स्विच पे स्ट्राइक होती थी और इलेक्ट्रिक करंट कट हो जाती थी. एंड टाइम केम व्हेन द शीप कंप्लीटली लर्न हाउ टू कट द इलेक्ट्रिक सप्लाई and get rid from the pain or aversive type of stimulus. This is known as punishment. Dear students, there is a difference between punishment and negative reinforcement. Negative reinforcers actually are those which precedes the response. यानी कि negative reinforcement वो reinforcement होता है which always precedes the response. रेस्पॉन्स से पहले जो आएगा उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीचर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को देता है बिकॉज वी डिफाइंड नेगेटिव रीइंफोर्सर्स आर दोज विच प्रोसीड्स टू द रेस्पॉन्स. अभी तो स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है लेकिन जो आपने एडवांस में कह के रखा है, आई विल बीट दोज स्टूडेंट्स हु विल फेल while performing particular type of mathematical exercise. So this is known as negative reinforcement or reinforcers. Now punishers. Punishers are those which follows the response. यानी कि जो response के बाद में आता है उसे punisher कहते हैं. जिस तरीके से हमने already जिक्र किया है how negative reinforcement is contradictory with the positive reinforcement. Same case is here. How punisher is different from or contradictory with the negative reinforcement. Negative reinforcement precedes to the response, while as punisher follows to the response. ये response से पहले होता है, while as punisher follows to the response. For example, बच्चों ने अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस किए. When you have evaluated the learner's performance, अब किसी लर्नर की परफॉर्मेंस कमजोर है या वो फेलियर का शिकार हो गया है तो बाद में जो आपने दिया that is known as punishment, and what you have to use it that is known as punisher. So these were the various operations which are involved in the operant conditioning theory. In next lecture, we will focus on new entitled theme, that is schedules of reinforcement. Hopefully believe that you enjoyed the lecture. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you and grow strong.